पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 देख रहे सारे ही व्यूज़ का इस चैनल ते एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। साडी अज दी वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दी हर उस क्लास दे नाल संबंधित है जिस दे विद्यार्थी ने EVS का पेपर देना हैगा, जिहड़ा कि अंडर ग्रेजुएट क्लासिस दे विच सिर्फ एक बार बच्चे ने अटैम्प्ट करना ही हुंदा है। सो इस मंतव दे नाल कुछ वीडियोज़ पहलां ही अपलोड कीतियां ने। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ अज तक वीडियोज़ नहीं देखियां चैनल का लाभ लैण लई ਪਹਿਲਾਂ चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर ਲੈਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 100 ਤੇ ਆਲ ਸਮੈਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ। टाइम अलाउड है 1.5 घंटे का। तो पहला क्वेश्चन है 5 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द फर्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ऑटोट्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज पर सैटेलाइट डाटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 19%। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ आल्सो नोन एज ओजोन ट्रीटी। विच वीड कम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका अलॉन्ग विद वीट? कांग्रेस ग्रास। सिगरेट स्मोक हैज़ अप्रॉक्सीमेटली डैश नोन कार्सिनोजेंस की हैगा 4। अगला क्वेश्चन है कारपेट्स रग्स कर्टन्स एटसेट्रा कॉज इंडोर पॉल्यूशन बिकॉज दे emit lead oxide, harbor dust, harbor spores बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर की है ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत सारे देखे अपन क्वेश्चन पेपरों के आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन होल वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंटार्कटिका इन 1985। विच इज़ द लास्ट स्टैप इन इकोलॉजिकल सक्सैशन? ये है क्लाइमैक्स। मार्क द नेशनल ट्री बनियन ट्री। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज़ कॉर्बेट नेशनल पार्क। हॉस्पिटल वेस्ट इज़ मैनेज्ड बाय इंसिनेटर। लॉयन टेल्ड मॉस्क्यू इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। विच वन इज़ rhinoceros रिजर्व? ये है काजीरंगा असम। इफ़ द बंगाल टाइगर बिकम्स एक्सटिंक्ट इट्स जेने पूल विल बी लॉस्ट फॉर एवर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन कन्वर्सेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ? मेकिंग स्ट्रिक्टेंट लॉज, मेकिंग न्यूमरस जूज, मेकिंग न्यूमरस सेंचुरीज, ऑल ऑफ द अबव। ताकि है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड बाय मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमोसफेयर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड NO2। द कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ एक्सेसिव यूज ऑफ इंसैक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर की है ऑल ऑफ द अबव। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ सैलाइन वाटर, कल्टीवेशन विदाउट इन्वॉल्विंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इसका आंसर ये है ऑर्गेनिक जी फार्मिंग है वो जो घट तो घट कैमिकल की यूज़ दी ते पेस्टिसाइड की यूज़ तो बिना जो खेती होंगी उन्होंने ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है। ठीक है। इन हरीके wetland the main problem is that of water hyacinth plant. Algal bloom result in eutrophication. The earliest biospeciside was pyrethrum, which is pollutant in troposphere and
protectant in stratosphere, ozone. Which one is a hotspot of biodiversity? Western Ghats. Black lung disease is common in coal miners. ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਫਾਰ ਫਿਊਲ। MAB program of UNESCO was launched in 1971 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। Green muffler is used against which type of pollution? ਇਹ ਹੈ noise. Smoking increases your susceptibility to which of the following? Flu, pneumonia, tuberculosis. Congress grass is a native of America. When is World AIDS Day celebrated? 1st December. When was family planning program adopted in India? 1952. Human range of hearing is between 20 to 20,000 hertz. The radius of silence zone is 100 meters. The list of endangered species issued by IUCN is called Red Data Book. Where was Earth Summit held in 1992? Rio de Janeiro. Endemic species are critically endangered species. 39 वाले क्वेश्चन का आंसर की है एंडेमिक स्पेसीज आर स्पेसीज लोकलाइजेज इन ए स्पेसिफिक रीजन। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 स्पेसिफाई minimum thickness of plastic bags should be 20 microns. Scientific name of Congress grass is Parthenium. Earth Day celebrated on 22 April. Partial nuclear test ban treaty was signed in 1963. Which of the following is a national bird of India? यह peacock. Acid rain is due to air pollution. Which of the following organisms is likely to have more concentration of DDT in body? Top carnivores. Water is often treated with chlorine to kill germs. Removal of desirable substances plants is called negative pollution. According to Municipal Solid Waste Management and Handling Rules 2000, the containers used to collect recyclable waste must be green. The Air Preventive and Control of Pollution Act came into force in 1981. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल रूल फॉर रोड सेफ्टी? रिस्पेक्ट ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, मेंटेन योर cool even in adverse situations, care and concern for others, all of the above. तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ all of the above. Which is the minimum age for obtaining learner's license for geared light motor vehicle? ਇਹ ਹੈ 18 years. Where one needs to approach to obtain driving license? Local transport zonal office. Safe driving requires good vision, good hearing, quick reaction, all of the above. ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਹੈ all of the above. The basic aim of first aid is to protect the victim from more harm, to save life, to reduce pain, all of the above. ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਹੈ all of the above. What does the following road sign means? ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ U turn prohibited. ठीक है, U turn ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ U turn prohibited. Which of the following is the duty of traffic police? Proper enforcement of traffic rules to ensure smooth traffic movement, to prevent and reduce accidents, all of the above. आंसर की है all of the above. अगला क्वेश्चन है while driving you see the following sign, it means हॉर्न प्रोहिबिटेड. ये हॉर्न का निशान है तो ये निशान लग्या तो मतलब हॉर्न मतलब इतने बजाना मना है.
The person can be charged for drunken driving under which section of MVA 1988? Section 185. The traffic police plays an important role in traffic management, preventing the violation of traffic rules, road safety, education, promotion, all of the above. ये आंसर की है all of the above. While driving a vehicle, a driver can dash use mobile phone, smoke, drink alcohol and take drugs. None of the above. इन्हां विचों कोई भी नहीं कर सकदा ड्राइविंग, ठीक है. कैन द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल यूज़ मोबाइल फोन की है? येस, आफ्टर स्टॉपिंग द व्हीकल ऑन रोड साइड. यू फाइंड द फॉलोइंग रोड साइन ऑन द रोड. वट डज इट मीन? तो ਇਹਦਾ मतलब की है ਸਕੂਲ ए हैड. ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ मतलब की है भी ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रोड सेफ्टी सेल? Publicly programs, setting up of model driving training school, national highway accident relief service scheme, all of the above. आंसर की है all of the above. अगला क्वेश्चन है which of the following is an emergency vehicle and requires free passage? A bus carrying passengers, ambulance, a fire service vehicle. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਹੀਕਲ, B and C, ਠੀਕ ਹੈ. ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਸਕੀਮ to appoint traffic wardens, to appoint women traffic employees, to appoint traffic citizens volunteers. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. How can you avoid becoming an aggressive driver? Starting your journey well in time to reach your destination, avoiding driving during peak traffic hours, avoiding driving when you are ਐਂਗਰੀ ਔਰ ਅਪਸੈਟ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ. ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਏ ਵਹੀਕਲ ਬਾਈ ਦੀ ਹੋਲਡਰ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਜ਼ when he is accompanied by an instructor holding a valid driving license, the vehicle shown L sign on the front and rear. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ L ਸਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਲਰਨਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਰੋਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ? Be a model role user, educate others, always help the accident victims, all of the above. The answer की है all of the above. Which of the following is a condition for obtaining permanent license? You must have a valid learner's license. You can apply after 3 days of issue of learner's license. You have to apply within 180 days of the insurance of a learner's license. All of the above. The answer की है all of the above. Physical violence includes pain. Which is the date of International Day for Elimination of Violence Against Women? 25th day of November. 25 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨ. ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which section of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 provides the protection order? ਇਹ ਹੈ section 18. Form of domestic violence is ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਅਬਵ. ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਹੈਗਾ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ? ਇਹ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 376E. ਸੈਕਸ਼ਨ 304 B of Indian Penal Code was added by the Dowry Prohibition Amendment Act 1986. Which section of the Indian Penal Code deals with the assault or criminal force to women? ਇਹ ਹੈ section 354. Which section of the Indian Penal Code defines the offence of sexual intercourse by a person in authority? 376C. Causing miscarriage with woman's consent or her guardian's consent is justified with exception. Which is the minimum period of imprisonment for the offence of causing miscarriage without woman's consent? Life imprisonment. Which is the punishment prescribed for committing any offence under section 325 IPC? Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or shall also be liable to fine. Grievance hurt means permanent prohibition of sight of either eye.
What is the maximum period of imprisonment for offence of committing voluntarily causing hurt by dangerous weapon or means? 3 years. Which section of IPC defines voluntarily throwing or attempting to throw acid? 326B. Section 312 of IPC defines causing miscarriage. Cancellation of birth by secret disposal of dead body. Secretly burying or otherwise disposing the dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth. Which section of IPC defines importation of girls from foreign countries? Section 366B. अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस trafficking of a person? 370. Section 354D provides punishment for committing an offence of stalking. Which of the punishment prescribed for committing an offence of assault or use of criminal force to women with the intent to disrobe shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine? Section 370A of IPC is a law related to exploitation of a trafficking person, exploitation of a trafficking minor, exploitation of a trafficked girl, all of the above. तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ आंसर? all of the above. Which is the age of child for committing offence of committing kidnapping or abducting a child to steal from its person under the age of 12 years? The offence under section 369 of IPC is kidnapping or abduction of child to steal from its person. Which section of IPC defines abduction? 362. What is the minimum period of imprisonment for committing the offence of importation of girl from foreign country? ये है 10 years. अगला क्वेश्चन है सेक्शन 372 ऑफ IPC डिफाइंस सेलिंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ prostitution etc. Which section of IPC defines kidnapping for ransom etc.? Section 364A. What is the punishment prescribed for committing an offence of procuration of minor girl for illicit forced intercourse? Shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. What is the time period of filing complaint against sexual harassment under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 within 3 months of the incident? Internal Complaint Committee completes its inquiry within the period of 90 days. ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ 2019 ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।